Liverpool 2, Everton 1. It's 5-5 for the champions. Welcome back to my channel The Marching Reds. मैं हूं अमन चीमा. इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा द गेम बिटवीन लिवरपूल एंड एवर्टन played at Anfield over the weekend, and what a massive 3 points for the Reds. So let's start right away. Playing 11 की बात करूंगा मैं, but I have to acknowledge and sort of criticize the Premier League here because उन्होंने हमें काफी क्विक टर्न अराउंड दिया था फ्रॉम द एटलेटिको मैड्रिड गेम इन द मिड वीक. We were slotted in to play the early kickoff this weekend, and क्या बोलूं मैं, मैंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर दिए थे पिछली वीडियो में. स्टिल आई हैव द सेम फीलिंग कि इट इज फॉर मी unjustifiable that how the Premier League can think कि it makes absolute sense for them. But again, we move on. Playing 11 की बात करूं, Alisson started in goal. Right back पे we saw Connor Bradley coming in, and centre back में it was again Konate and Van Dijk. Left back पे we saw Milos Kerkez, which I expected him to start, and midfield में we saw the big money signing in Florian Wirtz start at the bench, and Slot preferred a familiar midfield from the last season, which was McAllister, Gravenberch, and Soboslai. Or it was Gravenberch and McAllister who were sort of playing a double pivot, but McAllister had a sort of a forward role, and Szoboszlai getting into the number 10 position. And then attack pay, it was again pretty straightforward, knowing that Isaac played roughly an hour or so midweek. We expected Ekitike to start along with Salah and Gakpo, and that's how Arne Slot chose to start in this game. And इस गेम में काफी लास्ट सीजन वाली वाइब्स आई थी in terms of the players that Arne selected. And among the new signings for Liverpool, only two started this game, which were Ekitike and Kerkez, which was on the expected lines. So yeah, nice to see that we had Florian Wirtz being named on the bench, Frimpong named on the bench, Chiesa again not back in the squad, but good to see him back on the pitch after having missed the Champions League game, and then of course our number 9 in Alexander Isak. Everton, they announced a pretty solid starting 11. Like they had their all attacking players up front, Grealish, NDI, Dewsbury Hall, Beto भी था वहाँ पे, and I mean गेम प्लान तो एवर्टन का सिंपल ही था, जैसे मर्जी करके बस रोक के रखो, keep Liverpool at an arm's length and don't let them run away with the game. And if they're still in the game, like 70-80 minutes के आसपास, try to sneak in the equalizer or the winning goal. शुरुआत में लिवरपूल were looking like the dominant side. Like first half की मैं बात करूं, we scored 2 goals and we ended up that half 2-0. पहले गोल की बात करूं तो we see Gravenberch making a run towards the box and Salah finding him with a dink pass, and then Gravenberch की जो वो finish थी, like he just shoots the ball across his body, across Pickford, and ends right where the post was, right where the pole was, and it was a brilliant finish. And जिस बंदे ने last season एक भी गोल नहीं करा, he's already on 2 goals in the first 5 games. So yeah, it's nice to see. And then he celebrated, which was a big massive derby goal. So we get the goal 1-0 up, and then ठीक है, ऐसा नहीं था कि भाई वी सैट ऑन आवर लॉरल्स एंड देन एवर्टन को एक मौका मिल गया वापस आने के लिए. वी केप्ट ऑन अटैकिंग, एंड देन वी गेट द अनदर गोल जहां पे ग्रेवेनबर्ग, इंस्टेड ऑफ being the goal scorer, he was like the goal provider in this case, finds Ekitike in the same area. जैसे साला ने उसको डिंक पास किया था, ग्रेवेनबर्ग ने Ekitike को स्पेस में डाल के थ्रू बॉल पास करी, एंड देन Ekitike being the coolest guy at that moment finishes off in his clinical style and then goes off to celebrate. So in 30 minutes or so we were 2-0 up, and उस टाइम तक तो लग रहा था कि ठीक है, जैसे मैंने काफी बार पहले भी कहा है, get in the third goal, make it boring, finish the game. थर्ड गोल नहीं आ पाया इन द फर्स्ट हाफ, और अगर आप स्कोर लाइन देखो कभी भी, बट हाफ टाइम तक इट वाज ठीक है 2-0, सॉलिड स्टार्ट. बट जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ ना, वी कुड सी द इफेक्ट्स ऑफ द वेडनेसडे गेम टेकिंग अ टोल ऑन द प्लेयर्स. तो सेकंड हाफ में इट वाज ऑल एवर्टन इन द बिगिनिंग. हमारे पासेस ही नहीं हो रहे थे, एंड
Grealish was getting more of the ball. And right before the hour mark, Everton gets a brilliant chance, which they end up scoring. Grealish gets the ball, crosses the ball in. Uh, NDI sets it up perfectly for Idrissa Gueye, and then he smashes it and gets Everton back in the game 2-1. And वहाँ पे तो ऐसा नहीं था कि भाई we started capitulating, but it was more of like ठीक है अब ये फिर से गोल कंसीड करेंगे एंड देन लिवरपूल हैज टू माउंट अ कमबैक ऑफ सॉर्ट्स अगेन बट उसके बाद लिवरपूल ने काफी अच्छा कंट्रोल किया गेम को मतलब जब आप मैच देख रहे होते हो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर ऑलवेज वेरी ऑफ दैट वन random pass or like one random ball that ends up at the opposition's feet and then अगर उन्होंने shot ले लिया and then just because एक गोल का margin है you are like कि भी बस just keep them away तो ऐसा उनका एवर्टन का कोई ऐसा golden opportunity हम लोगों ने concede नहीं करी create नहीं करने दी और वहाँ पे काफी अच्छी performances आई from like different players तो मतलब काफी close हो सकता था but ठीक है like we take the win and move on. यहाँ पे I would like to take a few players' names. Milos Kerkez, like कुछ लोग बोल सकते हैं like he was at the fault of the Everton's first goal. But ठीक है overall मैं अगर देखूँ he had a decent performance. Gravenberch, Soboslai playing 90 minutes in 1 week for 3 games across like what we played Burnley away, we played Atletico Madrid home, which is again a tough fixture, and Everton, जो कि like बाकी लोगों के लिए या बाकी टीम्स के लिए easy fixture होगा, but Liverpool के लिए given it's a derby day, you know it's not an easy game. So again, hats off to them, and we saw Isaac coming on, we saw McAllister being substituted at the at the hour mark for Florian Wirtz and वो लोग ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाए मतलब it was जब 2-1 हुआ ना it was more of like Liverpool will score the third rather than Everton's will score an equalizer so उस मामले में it looked comfortable but ये बातें ना मैच के बाद जब आप रिव्यू करते तभी ठीक लगती हैं जब मैच चल रहा होता है ना यू आर जस्ट लाइक कि बस वही जैसे मैंने पहले बोला गोल करो खत्म करो गेम को तो या आई मीन ब्रिलियंट रिजल्ट परफॉर्मेंसेस सेकंड हाफ में थोड़ी सी लाइक क्या मैं बोलूं आउट ऑफ टच हम लोग लगे विच इज फाइन बिकॉज आप जैसे मैंने बोला खेल कर आ रहे हो 3 तगड़े तगड़े मैचेस और आपका क्विक टर्न अराउंड भी था एवर्टन में लास्ट सीजन हम लोग जाने जाते थे बिकॉज ऑफ आर सेकंड हाफ लाइक पहले लाइक लास्ट सीजन इट वाज कि भाई ठीक है फर्स्ट हाफ खेलो देखो क्या सीन है एंड देन सेकंड हाफ में आर्ने स्लॉट अपना जादू चलाता था और एकदम से इट वाज लाइक लिवरपूल लाइक इन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर नोइंग व्हेन टू एक्सेलरेट बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है यहाँ पे इट्स लाइक कि फर्स्ट हाफ थोड़ा हमारा डोमिनेंट रहता है एंड देन सेकंड हाफ के फर्स्ट हाफ में मतलब इन द फर्स्ट 15 20 30 मिनट्स ऑफ द सेकंड हाफ suddenly we lose the game like we lose balls we lose passes we try one or the other difficult passes we end up losing the ball and then we get the opportunity or like give the opportunity to the opposition to come and counter us so and then we are forced in a way to लास्ट के 10 15 मिनट में जाके विनर ढूंढने का बट ठीक है इस केस में एवर्टन के गेम में मेरे को बस ये था कि हम लोग बस जीत कर आ जाएं कोई इंजरी ना हो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द क्विक टर्न अराउंड फैक्ट कि भाई व्हाट इन द मैटर ऑफ 60 hours or so we had to recover train and be ready for this Everton game and Arne Slot ने कहा भी था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि we just had what like one or like half of a training session yeah I mean it is what it is we move on next up is Southampton at home and वहाँ पे आपको काफी रोटेशन देखने को मिलेगी तो don't be surprised if you see one of or like 2 3 4 of the renowned playing 11 members not even on the bench so I'm expecting that and do let me know in the comment section on how you thought the game went uh, were you feeling itchy as a Liverpool player that like last में जाके ना हम लोग स्कोर कर पा रहे हैं ना क्रिएटिव हो पा रहे हैं बट लाइक सम हाउ वी एंडेड अप मैनेजिंग दिस गेम बिकॉज एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा लास्ट तक जाते हुए ना लाइक लाइक व्हाट 85 90 मिनट्स के आसपास बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई वो लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम देव सॉ like only 1 minute being added after the first half and like what 3 minutes added after the 90 minutes अरे भाई जब कोई डिले ही नहीं हुआ है गेम में like if you are used to seeing like what 5 6 7 8 minutes added and just because is game may you are seeing like what 2 or 3 minutes being added in combined total 4 minutes added deal with it like
As a Liverpool fan, I was like, I would have been shocked अगर वो फोर्थ रेफरी 4 या 5 नंबर लेके खड़ा होता लाइक आफ्टर द 90 मिनट्स, बिकॉज अगेन कोई डिले हुआ ही नहीं था. तो जिस पॉइंट में मैं आ रहा था दैट वाज कि एक अनदर एलिमेंट हमने देखने को मिला ऑफ दिस लिवरपूल टीम विच वाज कि भाई ये थोड़ा सा ना लास्ट में जाके स्लो कर रहे थे गेम को, बिकॉज यहाँ पे लाइक प्रोज भी है कॉन्स भी है, बिकॉज यू डोंट सी अ लिवरपूल सॉर्ट ऑफ डिलेइंग द गेम और लाइक स्लोइंग द गेम डाउन इन अ वे. बट यहाँ पे एक अच्छा सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या था दैट दे न्यू कि भाई टीम is not playing at their fluent best, is not that pacey, is not does not want that quick start, the quick restart of a free kick, of a corner, of a throw in, and everybody on that pitch acknowledged that, and then they adapted to that particular shift or tweak in that tactic, which was nice to see. So they managed that game really well, and yeah, I mean, we are getting results. And एक बार बस ये performances click in होना शुरू हो जाए ना, which is a matter of time, then we would see a much more demanding and a commanding and a brilliant, brilliant Liverpool performance. So these were my thoughts. Do let me know in the comment section on how you thought about the game. Do you think 2-1 was a fair score line? Do you think that Liverpool playing in the early kickoff was fair? Let me know everything in the comment section. And if you've liked this video, let me know by liking this video, chiming in with your comments, and subscribing to my channel. I'll see you in the next one. Till then, take care.